Ladies and gentlemen, Moses Khidma Azad, Adabat here and Khushandi, welcome to this evening. It's very challenging to introduce somebody who's as multi-layered, multifaceted, a renaissance personality as Sheherazad, but even before I invite her here, her exhibition, and I'm sure some of you or all of you might have had the opportunity of experiencing that retrospective, and the title of the retrospective is Khud Kuza. Khud Kuza wa Khud Kuzagar wa Khud Gil Kuza. This is the line from Rumi, and the whole of the couplet is Khud Kuza wa Khud Kuzagaro Khud Gil Kuza Khud Rind Sabukash Khud Barsar Kuza Kharidar Baramad Bishakast Rama Shud. I am the vessel. I am the vessel. I am the potter. I am the plastic clay melting into a pot. I am the reveler. I am the reveler who drinks from it. And I am the one who buys the vessel and flings it in the air after emptying the chalice. Sheherazad, can I just say, and this is an open evening, and suggest to us if this is the right way of approaching it. We talked about it, and we thought that perhaps if we could have this dialogue in 4 sessions seamlessly, nothing compartmentalized, and Rumi is helping us all along, so perhaps the first session should be Kuza. Sheherazad. So how did you become the vessel? The vessel, the pot. Well, I guess like any pot, it is shaped. I too was shaped. And how was I shaped? I was shaped in my home, what my mother said to me, what my father did, perhaps the घर का माहौल जो होता है उससे बहुत कुछ किया. But where the big drama happened was going to National College and then being able to really go into the world of art and artists, and really after a very sheltered life to be open to just about anything. And it was, as is with a lot of us who remember when we were 18 and how we felt about education and what we were going to do with our education. So that was part of my forming. And making decisions about why would I choose textiles over painting, and many things led me into the studio where there were 30 wheels and no one to work, and I thought there is something wrong with this picture. And I was also very much raised in a Gandhian, apne haath ka kapda bana hua hai. I made all these oaths. So here you are seeing me being shaped in the college, which is exactly how when you take a ball of clay, it starts to shape. So I think that's what we are referring to, the Kuza. So I guess this is the Kuza when it's, and fikr, maybe apni fikr ke we are losing our craft, we are losing our history, the history of our land, tradition, heritage. अब उसकी फिक्र लग गई तो अब वो चीज़ पकड़ो जो कि कोई और नहीं कर रहा. So this is how I actually stepped into the studio while you were still in college, or no, later we met. So that's where the clay work, and then what it meant to me, the difficulties, then graduating and knowing that I know very little. And I knew as I crossed the threshold of National College, 15 साल तो लगी, अभी तो 15 साल के बाद है. And it is true that I actually 15 years later was invited to the same studio, and I taught my first class in NCA 15 years later. Something interesting about that. I mean, I'd like to ask 2 questions and then we'll move on. Right. Jakuza getting the art of making what you, but you tend to tell your students, and I bear witness to it, that you should listen to the clay. Yes. And it teaches you to foresee things. Yes. And you always reminded your students that pottery is empowering, it's emancipating, it's liberating,
you talked about its transformative effect and implication, but where is empowerment? How does it empower? How does it emancipate? How does it liberate? And what does it mean listening to the clay? Well, and it teaches you to foresee things? What are those things? It doesn't teach you to foresee things, it forces you to be ready for the consequences of what you do. आप बेफिक्र हो जाएंगे तो बेफिक्री में वो आपका जो चीज़ बनाएगी वो उसका विक्टिम होगा या वो, और अगर आप का फोकस इधर उधर आप खुद भी सेंटर्ड नहीं होंगे, वो सब आपको रिफ्लेक्ट करता रहता है। तो उससे आप सीखते हैं। मैं कहती हूँ जब शुरू होता है तो प्रोसेस बच्चों से भी यही कहती हूँ कि ये बोलेगी आपके पास, ये टिक्की बोलेगी, आप मुझे बताना जब ये बोलेगी। और आज वाकई में जो हमारी क्लास ख़त्म हुई और हमने कहा तो मैंने इनको बताया, आज उनके थ्रू मिट्टी बोल रही थी। जैसे ये हमें लगा कि हम यूँ नहीं कर सकते, और तो बोली पर मिट्टी ही बोल रही थी, विच वॉज जस्ट मार्वलस। तो ये एस्पेक्ट जो मिट्टी का है वो बहुत ही यूनिक भी है, क्योंकि इट्स अ लिविंग के मौसम, बारिश, हवा, हर चीज़ उसको इफ़ेक्ट करती है। और फिर उसका प्रोसेस कि आप इतने प्यार से कोई चीज़ बनाते हैं, और कोई आपकी तरफ से शायद ना गलती हो, लेकिन आपकी सोच में कोई चीज़ आ गई हो कि आपने छोड़ दिया हो उसको, और वो उसमें क्रैक्स पड़ते हो, और उसके बाद जब आपने फिनिश कर लिया उसको फिर आग को देना होता है, और आग में इसके अगर नहीं देंगे आग को तो फिर वो तैयार ही नहीं होगा, कच्चा रहेगा। तो अब आग में अपने आज और कल और 3 दिन से हमने जो फायरिंग्स की हैं उसमें यही लगा कि बच्चियों ने जो कहा कि हम तो अब खुद भी जल रहे हैं अंदर आग में अपनी चीज़ों के साथ। सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट आई कॉल क्लेंजिंग, टेस्टेड बाय फायर। बहुत सी चीज़ें क्रैक हुई, टूटी, तो हम लोग सब वी आर ऑल क्रैक्ड समटाइम्स बाय इवेंट्स और ब्रोकन, and then we become whole again. So, or we are always whole, and we haven't got cracks and we haven't been broken, but a lot of the time people are in that state. So, through that constant process of continuous focus and also loving it, there is no question about कि आप रात को you have no, जैसे बच्चे के लिए इंसान होता है रात को तो अगर बारिश हो गई, मैं पता नहीं मेरे पॉट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे फिक्र होगी कि कहीं पानी में वो बह ना जाए, और छतरी और टॉर्च लेके रात को जा रही, तब जिस टाइम एक जुनून भी हो जाता है, और इसी से फिर इंसान कुछ ना कुछ उससे करना है। आपने आग, पानी, हवा, मिट्टी, इन तमाम अनासिर का जिक्र किया, और आपने कहा कि ये तमाम अनासिर जो हैं ये कहीं हमारे साथ भी जुड़े हैं। हम उनकी वजह से we are earth, fire, water, and I'm sure because the students are here, they will tell you after we finish or this dialogue. I do believe we are because of. So जब we are because of earth, fire, water, फिर हम इससे, if we love ourselves, if we have respect for ourselves, then why aren't we taking care of the earth, the fire, the water, the air of our own? जैसे अब जो फायर है फॉर एग्जाम्पल, आज उस पर बहुत डिस्कशन रही क्योंकि सब चीज़ें वापस मिली कि आग इज़ अ टेस्ट, इट्स अ टेस्ट, बट ये आग एक चाहत की होती है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये सारे टेस्ट्स के थ्रू चलता रहता है। पुराना मुझे वो गीत याद आ रहा है पंजाबी का, जो कि सोनी महिवाल के किस्से में एक मुकालमा है, वो सारा किस्सा ही मुकालमे की शक्ल में है। तो सोनी जो है वो अपने महबूब से मिलने के लिए जाना चाहती है और नदी पार करना चाहती है, और नदी जो है वो ज़ोरों की चढ़ी हुई है और बहुत सा पानी है। तो सोनी अपने घड़े को कहती है, और वो घड़ा जो है वो कच्चा घड़ा है, तो वो उस घड़े को कहती है कि चारों चफेर ढेर हनी है, all around there's nothing but darkness, पानी ढेर, and the water is rising. आज मैनू पार लगा कड़िया, मैनू महिवा नाल मिला कड़िया. Take me
across the river and get me to my beloved tonight. खड़ा उसे देखता है तो खड़ा उसे कहता है कि कच्चे यारां दा वसा ना खाई कच्चे यारां दा वसा ना खाई कुड़िए मैं इश्क दी अग विच ना सड़िया. Don't rely on half-baked friends, for I haven't gone through the cleansing process. I haven't gone through the rite of fire. I'm not strong enough to carry you across. सोनी उसे कहती है कि पीछे रवा झूठी पा अगे जावा मारी जा उन सोनी नाल जेड़ी होनी पड़ी हो. I'd much rather cross the river. I'd much rather hazard the risk of drowning, but take me across. I would much rather be remembered who endeavored rather than the one who was cautioned and who was guarded.